Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well. This is a video session on monthly compilation for the PIB, and this discussion is for the month of November. All the important news that was reported in the PIB will be discussed in this session, considering the fact that this will be with relevance to your examination, specifically for the civil services. It will contribute in both prelims and mains examination. Before I start the discussion, I would just like to tell you, if you're watching the session on PIB, make sure you also watch the videos, the session on PRS, because it is very important to get a comprehensive and holistic idea about the news. ये दोनों की combinations अगर आप देखेंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे, I mean one after other, then you'll have a wholesome idea about the news bills that has been passed for a specific month. So make sure you watch both of them to get the most benefit out of it and excel in the examination so that it ultimately help you and the time would be utilized. Now let's get started with a part of PIB compilation. I have segregated this particular session paper wise, general studies paper 2, 3, some news which is basic in nature, news in brief. Then we have news, something news that is brief in nature, and preceded by the initiatives which is there in military part, right? तो कुछ military के exercises और जो initiatives हैं उसके साथ conclude करेंगे. Let's get started. The first, that is Gen Studies Paper 2 related news for the PIB. So the first is Second Voice of Global South Summit. This was there, again important, both in terms of General Studies Paper 2 and specifically for the prelims examination as well. Now what is important here, that India has actually hosted the second of the Global Voice Summit, right? So this discussed the changes that is posed for the global development and to sustain the momentum for more inclusive world order. This was held at G20 Virtual Summit. So this is again important. India actually had the presidency of G20 at this time, which continued till November 2023. And this was an important milestone occasion where actually India was poised to have second voice of Global South Summit. Now VOGSS, this is called in short, और इस vision में क्या important चीजें हुई हैं. So the initiative brought together 125 countries जो members country हैं. Apart from the member countries, all countries were invited to share their perspective and priorities on a common platform, right? Now this particular second voice of Global Summit is expected to generate the future momentum to achieve more inclusive, representative and progressive world order. See, if something is going at the global order, I'm specifically talking on the part of G20, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल ऑर्डर पे ही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. देयर इज नो ओनली स्पेसिफिक फोकस बट टू इंश्योर no, the part of beneficiary should be there, at a larger extent at the global level. The key focus is to share the beneficial outcome, चाहे वो प्रोग्रेस हो, कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो कि ग्लोबल साउथ ने की है ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी was also on the discussion agenda. Now, the second Global Voice Summit was actually structured in 10 sessions. Total 10 session में से की गई है, concluding the session with the head of state at the government level. तो हर एक स्टेट की जो हेड ऑफ स्टेट से उनके इनपुट्स, उनके सजेशंस को भी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई. Now, what is Global South? This is a term most common. The term actually refers to a geopolitical concept. Those students who will be appearing for PSI or optional, उनके लिए ये ज़्यादा relevant है. Encompasses the part of southern hemisphere, primarily जो region आते हैं, that is Africa, Latin America, Asia and Oceania. These are the countries which are not that developed. तो developed countries के comparison में ये countries जो हैं उन्हें global south कहा जाता है. The global south also referred to the nation regarded as relatively low in the economic and industrial development, typically located in the south or the more industrializations. Now, the other important news is about Pradhan Mantri Mahila Kisan Drone Kendra, again something important. This will cater the part of General Studies Paper 1 as well as General Studies Paper 2. Even it will substantially contribute in 3 as well. तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है ये स्कीम को, जो कि एक CSS स्कीम है. दिस इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोवाइडेड ड्रोन फैसिलिटी टू द वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप. इसके कुछ क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं. टेल यू द डिटेल्स. So first, what is the aim? It aims to provide 15,000 select women. These women belong to the self-help group
और इनको प्रोवाइड की जाएगी ड्रोन फैसिलिटी फॉर द पीरियड ऑफ 2024 till 26, राइट, रेंटल बेसिस पे होंगी, where government will be actually sharing the price in collaborations with the state and the union government. The drone are envisaged used by the farmers for the nano fertilizers and pesticides applications, right? Now, the group will be identified with a total of 89 lakh self-help worker that is working under the Deen Dayal Antyodaya Yojana, right? और इस स्कीम में जो initiatives हैं that is under the part to expected to help the self-help group जहाँ पे उनकी additional income को 1 लाख रुपए सालाना तक बढ़ाया जा सके. Now, PM inaugurate World Food India Summit. This is World Food India 2023. This is again something important where India has been putting its endeavor towards the food security. So the tagline for the summit was processing for prosperity. Now, the Prime Minister has unveiled the highly anticipated second edition. Now, this was also the second editions of the summit, which was there at Bharat Mandapam Pragati Maidan in Delhi, the new expo center, which was inaugurated during the G20 summit. The first launch was actually in 2017, जहाँ पे Ministry of Food Processing Industries ने इसके लिए थीम रखा था ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फूड इकोनॉमी. नाउ इस इवेंट के बारे में और कुछ बात करें तो ये फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के तौर पे इंडिया को फोरकास्ट किया गया, वेयर सेलिब्रेटिंग द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया हैज़ बीन एडवोकेटिंग मिलेट्स एज अ सुपर फूड और इंडिया में नहीं ग्लोबली मिलेट को सुपर फूड रिकॉग्नाइज किया गया है. एड्रेसिंग द गैदरिंग द प्राइम मिनिस्टर हेल्थ दैट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पवेलियन, उसके साथ साथ जो स्ट्रीट फूड्स हैं उसकी भी एग्जीबिशंस लगाई गई सो दैट पीपल कुड एक्चुअली कम टू नो हाउ द बेनिफिट्स ऑफ द मिलेट्स कैन बी देयर एंड व्हाट आर द अदर फूड आइटम where India actually making an excellent part considering the fact it has good number of health benefits as well. Prime Minister has underlined the part of World Food India with a huge example for food processing recognizing as a sunshine sector. The food industry को as a sunrise sector भी Prime Minister ने claim किया. Now, the focus area was for empowering the self-help group. Specifically, Union government has said that they are looking forward to empower the self-help group. Now, this self-help group will actually also come up with the possibilities where they will be augmenting their overall livelihood options, right? Prime Minister said that the seed capital assistance, this is the part of financial assistance that will be there, 1 lakh members, the marketing competitiveness, improving the packaging and manufacturing quality. Now, growth in the agriculture export, अगर growth की बात करें specifically if you look at the export part in the agriculture sector, so Prime Minister has highlighted that need to be have a friendly investor policies जहाँ पे remarkable growth देखी गई है. अगर agriculture sports की बात करें, so the export in agriculture sector has increased from 13%, this is from 13% to 23%, right? Or overall making 150% of the group, right? India now ranked 7th in terms of the export of the food value exceeding the value of 50 billions. Now this growth represents the great opportunity and the golden opportunity for India's startups to come up with the food manufacturing and processing industries. Now Pradhan जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, this was again something very important initiatives that was launched by the government of India and something biggest for time being since independence. This kind of initiative has there by the government. तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज की जो कॉर्पस टोटल गवर्नमेंट को स्पेंड करनी है दैट इज 24,000 करोड़ रुपीज, राइट, फॉर द ट्राइबल वेलफेयर. एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर स्कीम एंड टारगेटिंग द ट्राइबल कम्युनिटी विद द टर्म ऑफ आउटले. तो ये अभी तक की सबसे बड़ी स्कीम है जो कि स्पेसिफिकली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में उनके बेनिफिशियरी के लिए कैटर करेगी. Now, what is the aim of this scheme? First, it will actually cater the particular vulnerable tribal group populations, right? उसके अलावा उन populations को housing, drinking water, sanitation, access to education, health and nutrition, telecom, connectivity, ये सारी चीजें मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी. So this will endeavor to achieve all this target, right? And it also the scheme actually provide for around 4.9 pakka houses, 500 hostels, 2,500 आंगनवाड़ीज, installations of mobile tower which is 3,000 village और 8,000 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएंगी. So these are
द एक्चुअल टारगेट्स, जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ने सेट की हैं टू अचीव विद द स्कीम. द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विल फैसिलिटेट द स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन द सेलेक्टेड विलेज एरिया. नाउ पीवीटीजी कम्युनिटी की अगर बात करें, इनकी पॉपुलेशन इंडिया में है और ये 75 ऐसे ग्रुप हैं जो अभी भी हैं 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में. सेंसस के मुताबिक जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है विच इज़ क्लोज टू 10.45 करोड़, और डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इनकी पॉपुलेशंस है दैट इज ऑल्सो देयर इन उड़ीसा, देन वी फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राइट, एंड इवन झारखंड. द टोटल पीवीजीटी पॉपुलेशन इज मोर देन 40 lakh. Now moving ahead with general studies 3 related news, जो GS पेपर 3 के लिए relevant news है उसे डिस्कस करेंगे. So the first is directive on the deep fake. We have been recently witnessing the news where deep fake was there in the limelight, और deep fakes को लेकर के गवर्नमेंट ने regulations की भी बात की है. Now regulations become very important in the context where the morphed video of Prime Minister, many important celebrities were in circulations. So the union government has mandated all the media platform कि अगर किसी भी तरह की मॉर्फ वीडियोस आती हैं तो 24 आवर का विद इन एक्शन लेनी होगी अंडर द आईटी रूल 2021. डीप फेक्स या वीडियोस की बात करें, दीज आर द टाइप ऑफ मैनिपुलेटिव वीडियोस विच आर मेड यूजिंग द एआई टेक्नोलॉजी, राइट. एंड डीप फेक्स वीडियोस आर क्रिएटिंग डिल्यूजन्स, मेकिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोशॉपिंग टेक्निक्स एंड मेकिंग द इमेजेस फॉर फेक इवेंट्स. Deepfakes were there since 2017, पर इंडिया में इसकी जो प्रोमिनेंस है वो अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिली है. नो लॉस क्या है इंडिया में? एज पर द पार्ट वी हैव नो स्पेसिफिक रूल, बट आईटी रूल 2021 में इसके बारे में जिक्र है, जहाँ पे इंटरमीडियरीज को ये अलाउ किया गया कि विद इन 36 आवर्स दे हैव टू टेक एक्शन, बट गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे विल टेक एक्शन विद इन 24 आवर्स इटसेल्फ. IT ministry has issued the part of rules and regulations where it is illegal under section 66D of the Information Technology Act 2000. इसमें भी काफ़ी changes किए गए हैं. The new rules are actually put in place. So government is definitely making its due possible endeavor to ensure that there is regulation with regards to the deepfakes. Now the IT rules prohibit hosting of the content, impersonate with other persons, social media firm taking down the artificially morphed images when actually alerted. तो यहाँ पे जो एक्शन है वह विद इन 24 आवर लेनी होगी. Now global responses की अगर बात करें, we have seen that European Union has specifically come up with their fact checking and they have also regulation with regards to deepfake और AI technology को लेकर के. US ने भी actually bipartisan deepfake task force बनाया है जो कि काउंटर करती है वहाँ पे and they are actually helping to counter the part of fake deepfake technology in the United States. Now moving ahead, that the term of reference to the 16 Finance Commission was approved by the central government, the union government. We'll see the detail to this. So distributions of net proceed of taxes के बारे में, this is the one component of the TOR which the 16 Finance Commission will be looking with. उसके अलावा allocations कैसे करनी है states और respective part of set proceeds में, principal grant और ये जो दी जाती है states को उसके बारे में recommendations देनी होगी. Measures to supplement the resources to पंचायत, ये सारी basically TOR होंगी जो कि 16 finance commissions, I'm specifically talking about the 16th finance commission that will be looking for. The commission will assess the current funding disaster management की जो initiatives हैं उसको लेकर के, और जो disaster management act 2005 है उसमें क्या क्या important changes की जा सकती है उसके लिए भी relevant recommendations देनी होंगी. The panel will suggest to increase the state consolidated fund of India, जिसे SCFI भी कहते हैं, and resources to panchayat and local bodies as per the State Finance Commission recommendations. The government has set the deadline for panel to submit the recommendations. Now, India to chair International Sugar Organization in 2024. These are the other important milestone achievement that India is claiming in terms of international forum. और अगर बात करें इस तरह के initiatives के, इंडिया के recognitions भी बढ़ी हैं. Now, India has to become the chair of ISO, that is International Sugar Organization, from 2024 till to the part of lead global sector. And 63rd मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेयर करेगी फ्रॉम 2024, राइट. सो दिस विल बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपसे ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जामिनेशन में कि किस पर्टिकुलर सेशन में इंडिया को अलाउ की गई. दिस वाज 63rd सेशन. The huge achievement to lead the global sector, which reflects India's progress achievement in the sugar industry.
Sugar production in India की बात करें, India have a dominant position when it comes to sugar productions. 15% जो total consumption है globally. I mean, if you look at the sugar consumption globally, तो 15% coming from India, 20% global productions की. Sugar trend is with a significant influence with the international market. और Eastern Hemisphere में India lead the sugar market, completing to Brazil in the Western Hemisphere. Western Hemisphere में Brazil tops the rank, and in the Eastern Hemisphere India tops the rank. नाउ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ब्रीफ्स आपके लिए जानना जरूरी है. दिस कैन बी रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स. इट एक्चुअली रिप्रेजेंट 87% of the world sugar productions, 64% of sugar consumptions, 34% of import and 92% of the export. राइट, ये फॉर्म की गई थी 1992 में और उसका एम है टू फोस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन शुगर रिलेटेड मैटर्स. उसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशंस होती हैं शुगर इकोनॉमी में, उसको मॉनिटर करना, फैसिलिटेट करना, collect and disseminate the informations, encourage huge with the part of expandable sugar use, especially for the non-traditional application. So these are some of the important mandates of the ISO, that is International Sugar Organization. Now moving ahead with other news, that is World Climate Action Summit, जिसे GASB कहते हैं. This is something again important where India has specifically highlighted the need of the hour. So we'll see the detail to this. So Prime Minister has attended the World Action Climate Summit. This was there at COP28. COP28 was held at UAE in Dubai, right? इससे पहले COP27 इजिप्ट में हुई थी, शर्म शेख में, right? Now UNFC और COP की बात करें इंडिया में, at the part of India's collaboration, the Conference of Parties is a unique opportunity जहाँ पे collective actions ली जाती हैं by the member country, target set की जाती है that how we'll be achieving. I have already made a discussions regarding the COP28. मैंने डिटेल में अपने DNE वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस किया है. If you have not watched this, do check out today's session. You'll get the clarity. Now ग्लासगो में भी इस तरह की बातें हुई थी जहाँ पे क्लाइमेट को लेकर के स्पेसिफिकली इंडिया ने पंचामृत दिया था. And in that, the important target was about net zero emissions by 2070. The Prime Minister has announced Mission Lifestyle for Environment on the occasions. And even it is important that India's की जो G20 presidency time में India's ने New Delhi leader declarations को sign किया, which is an outcome for India's presidency, and it was something which was adopted with full endeavor so that we are actually able to achieve and chase the targets. Now COP28, I mean I have been talking about this for quite long. I mean इसके बारे में आपको पता ही होगा. So इसमें कुछ important sessions हैं रखे गए हैं for finance के लिए. Emission reductions, adaptations on climate impact on transitions to clean green economy and inclusivity. उसके अलावे जो clean energy है उसके बारे में भी काफ़ी बात की गई है. The UN conference was hosted by UAE, features at high level, और key aspect जो इसमें थी वो global स्टॉक टेक को लेकर के की गई है, जो कि इवेलुएट करेगी सारे कंट्री के उनके एक्शंस को, उनके इंटेंडेड कंट्रीब्यूशंस को. नाउ सम न्यूज़ व्हिच इज ब्रीफ इन नेचर, आई टेल यू इन ब्रीफ. सो लक्षित दिवस मनाया गया. दिस वाज वेयर प्राइम मिनिस्टर हैज एक्चुअली पेड ट्रिब्यूट टू लक्षित बोर्डपुकन. सो ही वाज एक्चुअली कॉमेमोरेटिंग द पार्ट ऑफ Assam folk hero with 400th birth anniversary. Now the first train service to Badam Pahar, this was an area which actually belonged to the region where the president of the country belongs to, right? ये अभी देखा गया कि 112 years में पहली बार ट्रेन एक्चुअली वहाँ से चलाई गई है, right? And be it road, railway things, the president of India said that railway is something which is very important for the connectivity of the country. तो कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है बादाम पहाड़ किस रीजन में है, और ये पार्ट ऑफ ओडिशा, और ये भी पूछा जा सकता है कि बादाम पहाड़ किस पर्टिकुलर प्राइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ से आते हैं. तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है वन एग्जामिनेशन. नाउ Kozhikode and Gwalior has been created as the UNESCO Creative City list. Kozhikode is known as the literary trump. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है इसको. ये परमानेंट एनुअल केरला जो केरला में फेस्टिवल होती है, लिटरेचर फेस्टिवल, उसको ऑर्गेनाइज करती है. सो कोझिकोड इज अ प्लेस. और दूसरी सिटी है ग्वालियर जिसको म्यूजिकल कैटेगरी, दीज आर द कैटेगरी, द कोझिकोड फॉर लिटरेरी कैटेगरी एंड ग्वालियर फॉर म्यूजिकल कैटेगरीज, जहाँ पे इनको अवार्ड बेस्टो की गई है. कल्चरल हेरिटेज के बारे में अगर बात करें ग्वालियर की, तानसेन एंड बितिथि भवाना इज एस्टिमेटेड. और कुछ घरानास की बात करें, ग्वालियर घराना इज अमंग द प्रेस्टिजियस एंड रिकॉग्नाइज्ड नेम विच यू मस्ट हैव रेड इन NCERT फॉर इंडियन कल्चर.
Now moving ahead with some of the important bilateral agreement and summit which was there for the month of November. So the first is fifth US India 2+2 ministerial dialogue. ये काफ़ी important है prelims point of view से भी. यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दे मे हैव अ विजिट और डिप्लोमेटिक लेवल पे ये टॉक चल रही है हर साल. और इस पर्टिकुलर डायलॉग में हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक विद द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर हैज एक्चुअली पार्टिसिपेटेड. आउटकम्स की बात करें, मेजर डील्स की बात करें, so there were two major deal. What was two major deal? That deal actually belonged to, first that is about the 31 MQ-9B high altitude endurance drone जो कि इंडिया की ज़रूरत है, it's a need of that. And second is the manufacturing of General Electric F414 jet engines. This is what also India is looking forward with Make in India manufacturing. और लाइट कॉम्पैक्ट इंडिजिनस जो क्राफ्ट है इंडिया के पास उसके लिए भी ये मदद करेगी फॉर द जेट रिप्लेसमेंट, राइट. नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड नेक्स्ट ईयर और 2+2 डायलॉग इनेबल करती है दोनों कंट्री के बीच में प्रोग्रेस को, जहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन में देयर इज अ कॉपरेशन दैट हैज बीन मेड. Technology value and the other value chain, people to people connect, people to people ties are always there in this particular 2+2 dialogue between India and United States of America. Now, India-Australia 2+2 minister dialogue. This is now with Australia, where the part of defense cooperations deepening the strategic partnership were actually taken into consideration. उसके अलावा जो trade और investment है उस पर भी बात. सो फोकस एरिया की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट किया था. फर्स्ट वाज अमंग देम द मिलिट्री कॉपरेशंस इंक्लूडिंग द सबमरीन्स, एयर वॉरफेयर एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग. उसके अलावा इंडो चाइना रीजन और चाइना की जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है उसके बारे में भी बात की है. स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक में चाइना की डोमिनेंस को इंडिया ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन पे इसको लाया जाए और इसकी बात ये बात बताई जाए लोगों को कि आई मीन द चाइनाज डोमिनेंस इज ऑलवेज देयर इन द इंडो पैसिफिक. Hydrography cooperations, strengthening the sectors with critical minerals, space, education and science and technology. This was the other area. उसके अलावा MRO, that is the maintenance, repair and overhaul of the aircraft, and joint research in underway technology and collaborative areas. Now, India और EU ने सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर इज समथिंग विच इज अगेन अ बूम फॉर इंडिया. सेमीकंडक्टर को लेकर के इंडिया ने कई ऐसी पॉलिसीज भी लाई हैं. अगर वो PLI स्कीम को भी आप देखें, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, वहाँ पे भी इसकी बातें की गई हैं. सो इंडिया हैव एक्चुअली साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स विद यूरोपियन यूनियन. Aim is to increase the reliance on the semiconductors, जो value chain है between India and EU, that is European Union, right? So this will cover the research, innovations, talent development, partnership, exchange and market information. Besides this, mutually beneficial collaborations होंगी semiconductor technologies में, advancing the packing technology, design and raw material. Now this is move sync with the India's plan to provide incentives worth 10 billion for cheap manufacturing in the country. So this is what the target is, to make it more larger in terms of manufacturing sector for the semiconductors. Now ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जहाँ पे इंडिया और EU के ट्रेड काउंसिल मीटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की गई है, लाइक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, सप्लाई चेन एंड इनोवेशन. See, I mean, research and development is also one of the other important component. Now, the role of TTC, that is Trade and Technology Council, is to have a strategic engagement between both partners, right? And India is the second country after the United States with the EU to have a TTC mechanism. So this can be again an important point for the prelims examination. Now, some military exercises and initiative. This is the last part of our discussion. तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इनिशिएटिव्स रहे हैं बिटवीन द अदर कंट्रीज एंड विद इंडिया. सो फर्स्ट इज चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023. ये फर्स्ट एडिशंस थी चाणक्य डिफेंस डायलॉग की, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी. सो इंडियन आर्मी वाज अगेंस्ट द वन एंटिटी. उसके अलावा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने इसे ऑर्गेनाइज किया. थीम जो थी दैट वाज सर्विंग इंडिया एंड इंडो पैसिफिक अ ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, राइट. क्या क्या फोकस एरिया थे? फर्स्ट वाज द नेबरहुड फर्स्ट. नेबरहुड फर्स्ट इंडिया की पहले से भी पॉलिसी रही है. इंडो पैसिफिक रीजन, collaborative partnership for security, emerging technology on defense and security. Indian defense security has enabled to the collaborative capacity building and comprehensive deterrence. तो ये कुछ important areas थे इस बार के focus area में चाणक्य डिफेंस डायलॉग. Those who are appearing for CAPF examination, उनके लिए ये sections काफ़ी ज़्यादा important है. Now exercise Mitra Shakti. This was exercise which is there.
took place at Pune. So this aim is to conduct the sub-conventional operations chapter of the United Nations Charter. The scope is to standardize during the counter part mechanism, right? And both sides have practiced the destroyer, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने मार्शल आर्ट्स रिफ्लेक्शन ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज किए थे. सो आई हैव बीन डिस्कसिंग मेनी अदर एक्सरसाइजेज बिटवीन द कंट्रीज. सो चेक आउट कि मित्रा शक्ति कौन से कंट्रीज के बीच में हुई, राइट. Exercise Astrahan, the Indian Armed Forces is like 81 personnel departed from Australia to take in the initiatives. और ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ रीजन में की गई है. द एम इज टू फोस्टर द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स. The exercise will promote exchange of ideas and jointly rehearse the technique, procedures and conducting the tactical operations. Exercise में हमेशा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं दो कंट्री के बीच में वो एक्चुअली शेयर की जाती हैं. And apart from this, the strengthening of the defense cooperation between the two friendly nations was also there. Now, mission, the joint military exercise that is Shurya Kiran, India और नेपाल के बीच में थी ये. That is 34 personnel were actually the part of this joint exercise. It was conducted in Pithoragarh in Uttarakhand in 24 November to 7th of December. The aim of this exercise is to enhance the interoperability. किस तरह की jungle wars होती है, counter terrorism mechanisms हैं, and even the human assistance and disaster relief under the UN Charter of Peace on Peacekeeping. The exercise focus on drone and counter drone measures, that is the aviation aspects and environment friendly conservations. The exercise aims to achieve security objective and foster the bilateral relationship between India and Nepal. So this was all about for the discussion for the PIB for the month of November. I will just reiterate what I have said in the beginning, that make sure you are watching the PRS video also, so that it will give you a wholesome idea about the news that were reported for the month of November. PRS will cater the part of the bills that was there in the news, and the PIB, the important government decision that is always there relevant for the civil services examination. So this was all about for the PIB compilation. If you have any other concern about test series, admissions, programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.